Chitral, known for its breathtaking mountains and lush valleys, is a land of extraordinary beauty, yet deeply vulnerable to natural disasters. Today, the region stands on the front line of climate change. Water sources are shrinking, and fertile lands are turning dry, becoming a growing nightmare for local farmers and communities. 2015 की एक हया इलाका फ्लड की थी हसे पूरा की पूरा निज़ाम उधर हम बर हमारे स्पा कंदूरी की जंगलात स्पा कंदूरी की फसल शोनी आते तटे माँ पुलुई आते हादसों शिकार होनी और स्पा क्या की इरिगेशन चैनल शो स्पा सेरो शो हसे दी बगाई. In response, WWF-Pakistan, with the financial support of FCDO, launched an initiative to strengthen water management through nature-based solutions. WWF is pa bo shukurguzar as is pasun bo sheli taun kurios hai is salar is pa joy hash ki joy shoni magamata likoshani joy moyan is pa sheli kur savzeta o khan se sheli bitis pa zamina taran likno bayan pa WWF wala farkhanda ka is pa training prai sabziyan chutre ko wala ki seasonal ilawa di is pa tan sabzi le khitan istemal kor ko bosi adrak di kishini breshno de kishini char bag ben heli di is pa From Buni, a dedicated team is working closely with communities, ensuring that solutions are not only effective but sustainable. Because real change begins when communities become part of the process, managing and protecting their own resources. अपर चित्राल में WWF अपने रेप प्रोजेक्ट में जो कि FCDO फंडिड है वहाँ पे मुल्क और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में तकरीबन हमने 3 गेबियन वाल बनाए हैं 3-4 चैनलाइजेशन के ऊपर काम किए जहाँ पे लोगों की वाटर स्कैर्सिटी को हमने मद्देनज़र रखते हुए चैनल्स को रिहेबिलिटेट किया है और मुल्क यूसीज़ में हमने तकरीबन 2 एरिया में चेक डैम भी बनाए हैं जहाँ पे फ्लैश फ्लड का ज़्यादा ख़तरा रहता था. 2 प्रोजेक्ट्स कामयाबी से सोलर अपलिफ्टिंग ने हमें 3 इंच पाइप में हमने लोगों के फसलों तक पानी पहुँचाया है. Across Upper Chitral, practical solutions are restoring life to the land. Irrigation channels like Gomjui, Murabir and Gambor are bringing water back to fields, supporting thousands and strengthening local livelihoods. पर डिस्ट्रिक्ट का इसपा कोष्टो ऊख बोकम और जो हस बोझते कि इसपा चैनल का एस भी गोज है कच्चा भी गोज है दिया से हतेरा जज़ब बोझता है जज़ब बीती अवामो ऐसे ऊख जाए बोझ और क्या बात की WWF गीती इसपा है चैनल गंबर जोई कि हतो लाइनिंग कोरी इसपा मतलब आज जैसे कि इसपा हतो कंप्लीट आ रही है हनीसन इसपा तकरीबन 250-260 घराना हतगारी इस पर फ़ायदा उसने सियान इस पर हतगार फ़ायदा तारुआन और हाने से हते वो मतलब बेआई ज़ाये बिकार मतलब हाजोशे कि इस पर तारुआन. In Nogram village of Morku, a rain-fed pond is serving as a vital water reservoir, storing millions of gallons of water to irrigate farmland and sustain daily needs. By capturing rainwater and supporting natural groundwater recharge, this nature-based solution is strengthening water security while restoring balance to the local ecosystem. Protective structures are reducing the risks of floods and land erosion, safeguarding homes, farmland, and vital infrastructure. हमारे यहाँ वाटर इरोजन का मसला था दरिया की वजह से लोगों के मकानात तो बागात वगैरह ज़ाये और जानी नुकसान भी हो रहा था वो भी कंट्रोल कर लिए हैं. Solar-powered systems are lifting water to higher ground, introducing reliable and sustainable irrigation for the future. ये तहसील मुल्क को जो है ओवरऑल पानी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है. मैं बहैसियत वाटर यूज़र ग्रुप का चेयरमैन इससे मुतमईन हूँ कि उन्होंने बेहतरीन काम करके हमारे इलाके को सोलराइजेशन सिस्टम में मुंतकिल करके हमारे जो मुश्किलात थे उससे उस मुश्किल काम से निकल चुके हैं. WWF गीती इस पाते सोलराइजेशन करता है सोलराइजेशन किचे कि इस पाच हमें पैनल ट्रोकिशन हमें पैनला 3 इंच ओगिनी सिरान तकरीबन 8 सिगराना रोज इस्तेफादा कोसियन पर WWF पाकिस्तान इंतहाई शुक्रगुजार.
Today, water is flowing again. Fields are turning green, and communities are becoming more resilient. In a region on the front line of climate change, these efforts are not just improving lives, they are securing the future of Chitral.